Yeah. After this, write one. I'm going to show you a non-continuous 1 by x. See 1 by x. If you were trying to make 1 by x, right? This is the graph of 1 by x. You'll make it like this. You'll keep a pen. You'll make it like this. ऐसे बनाओगे, right? ऐसे बनाए, ऐसे लेके गए. अब यहाँ you have to lift your pen at x equal to 0 to lift your pen and start again from the top, right? Like this, right? So this is not continuous. Okay. This is a not continuous function because you have to lift your pen. Fine. But then at some points it will be continuous, right? Yeah, but if a function is discontinuous even at one point, then on the whole, it is said to be discontinuous. But yeah, you are correct. If I am asking at x equal to 2, is this continuous? Yes, this function is continuous still at x equal to 2. Understood? Is this function continuous at x equal to 0, Sia? No, because it will go to infinity. नहीं सुनाई दे रहा मुझे. I said no because I think infinity पे जाएगा. हाँ, 0 पे नहीं है continuous ना, 0 पे उठाना पड़ रहा है. You have to lift your pen to make the graph, right? Yeah. Is everyone understanding that this function is not continuous at x equal to 0 and continuous at x equal to suppose 2? Yes or no? Okay. If you do 1 by x square, sorry, 1 by x square, right? 1 by x square. Is this function continuous? What do you think, Adi? No, sir. I don't think. Why? So when we see at x equals 0, we can. कहाँ जा रहा है? This will climb up, no? But can't I argue that actually I was making this graph? I reached till infinity. Then I came back and then like this, I don't have to lift my pen. Do you think this is a valid argument? You can't possibly take your pencil to the infinity. So like, yeah, I don't think it's a valid argument. Yes, this is not a valid argument. Does everyone understand the argument which I put and what is wrong about it? Yes, sir. Good. Okay. So this is also not continuous, right? 1 by x square is not continuous at x equal to 0. Therefore, this is a discontinuous function. Okay. Now this, okay, 1 by x square और कोई function है क्या? और भी बहुत सारे हैं. हाँ, this is suppose discontinuous. Have you heard of step function, greatest integer function? पढ़ा है क्या क्लास 11 में? पढ़ा है ना? देखता हूँ इसमें शायद है क्या? फ्लोर फंक्शन बोलते हैं ना उसको. फ्लोर ऑफ x. हाँ ये देखो. Floor of x. For now, I'll not explain floor of x. This is, you have also maybe written in terms of SAX, right? It is also called GIF, okay, greatest integer function. I'll explain this, okay, in some time. बना लो ऐसे पहले बना लो. This is the function, okay, ऐसे steps. It is in steps. This is also not a continuous function. It is discontinuous at which points? What do you think? Right, this is discontinuous at all integers. It is discontinuous at all integers.
this step function is, or floor function, it is also called floor function, it is also called step function, it is also called greatest integer function. ठीक है, okay. Okay, now we'll come to the formal definition of continuity. Okay, book खोलो, book. ठीक है, बुक में पहला पेज जाओ, एक आइजैक न्यूटन की फोटो बनी है ना, मिल गई, उसके नीचे देखो एक फंक्शन बना है, वो फंक्शन में क्या लिखा है, ऐसे कुछ ब्लू लाइन बनी है, दो हॉरिजॉन्टल, राइट, दिख रहा है ना सबको? तो उसमें देखो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कुछ गड़बड़ है उसमें ना, जीरो पे फंक्शन की, ये पूरा एक ही फंक्शन है, ओके, दिस वन कंप्लीट फंक्शन, एक ही फंक्शन है। तो देखो इट्स अ पार्ट ऑफ टू कांस्टेंट फंक्शंस है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क व्हाट इज अ एफ, उसका एफ का डेफिनेशन देखो लिखा है लेफ्ट साइड में, एफ एक्स इज 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट? चलो तरुण, तुम मुझे बताओ, अगर एक्स की वैल्यू 5 है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? तरुण, हेलो? Yes, sir. If the value of x is 5, what is the value of fx? Hello. Hello, I can't hear you. Why is your internet so bad? Hello? Hello, Varun? Varun? Yes, sir. Can you hear me? Yeah, I can hear you. What is the value of fx if x is 5? Sir, it will be 2. If x is 7? Sir, 2 only. What about if x is 0.5? Still 2 only. Sir, still will be 2 only. Okay, what if x is equal to -1? Then will be 1. What if x equal to pi? 2. Okay. Okay. See, everyone, okay, you can see my screen, right? Fine. See, so the function is looking like this. By the way, everyone understood, right? The question and answers I asked Varun and what answers he gave. Everyone has understood those, right? Arshi, you're speaking something, but I can't hear. No, I didn't say anything. Okay. So the function looks like this. Okay. So I asked at x equal to 2, suppose x equal to 3, fx was equal to 2, right? ये 0,2 है point और ये 0,1 है, right? Yes, everyone, ये सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा, what f of 3 कितना है? 2, right? f of 3 is 2. Try to understand this. At 3 the function is continuous. That means we don't have to put lift our pen while making the graph, this, right? So at x equal to 3 we don't need to lift our pen while लिखते रहना, ठीक है, while making the graph. This implies this. What does this imply? Okay, mathematically, what does this imply? See, if the value at 3
the value just after 3 and the value just before 3, left of 3 and right of 3. Compare these three values. This implies mathematically that three values, which values? F of 3, right? F of 3, F of just right of 3, okay, and F of just left of 3. These three values must be equal, okay, fine, because the function is if fx is continuous at 3, then these three must be equal, right, to each other. See, we'll try to understand understand this more. 3 पे function continuous है, right? 3 पे function continuous है, and 3 पे these three values. See, if you see just to right of 3, what is f of 3? It is 2, right? To just the right of 3, the value is still 2. This is also 2. Just to the left of 2, 3, it is 2. Understood? All of you understood that this is 2, this is 2, this is 2. Why? Because from the graph you can see that just at 3 the value is 2, just to right of 3 value is 2, and just to left of 3 value is 2. Fine, everyone? Yes, sir. So therefore function is continuous at x equal to 3. Fine. समझ में आ गया सबको? ठीक है, अच्छा, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अब यही हम द सेम चीज वी विल चेक एट x equal to 0. ओके, चेक एट x equal to 0. x equal to 0 पे ना क्या है, देखो x equal to 0 पे द वैल्यू ऑफ f of 0 कितना है? f of 0 कितना है? Adi, you tell me from seeing the question, what is f of 0? 1. F of 0 is 1. Why it is not 2? Because when x is greater than, if x is smaller than or equal to 0, the value of f of x is 1. हाँ ठीक है, good. और f of just right of 0 कितना है? Then it will be 2, because it will be more than 0. हाँ, क्योंकि तुम 0 से x equal to 0 से थोड़ा सा भी इधर जाओगे तो तुम यहाँ पहुंच जाते हो ना. समझ में आया? Everyone has, do you understand this? So this is 2. Oh my bad, this is 2. What if f of just left of 0? This value is 1. 1, क्योंकि 1 0 से just इधर पे value is 1, right? ये सबको समझ में, everyone has understood कि नहीं आया ये? Someone is trying to ask, but yes, yes. Now we wrote f of 0 is 1 because we have told कि f is 1 if x is. हाँ, उन्होंने बोला है, yes, उन्होंने बताया है. हमें कैसे पता चला? क्या हमें कैसे पता चला? कि 0 is 1 और 2 ग्राफ देख के. क्योंकि नहीं ग्राफ देख के नहीं पता चला. ग्राफ देख के पता नहीं चला. उसको एग्जैक्ट 0 पता चला है, वो जो उसने डेफिनेशन दी है उससे पता चला है. ओके. और उसी डेफिनेशन को देख के उसने ग्राफ भी बनाया है. हमने ग्राफ भी यहाँ पे हमने ऐसे फुल सर्कल बनाया है और यहाँ पे ऐसे खाली छोड़ा है. वो जो हॉलो सर्कल और फिल्ड सर्कल होता है ना, वो पहले डेफिनेशन पढ़ी. अच्छा, डेफिनेशन में लिखा है fx is 1 if x is 1, लिखा है if x is less than equal to 0. जब ये पढ़ा ना मैंने इसको यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ऐसे फिल कर दिया, ये फिल कर दिया यहाँ पे. अंडरस्टूड? हाँ. ठीक है, ओके. अच्छा, ये एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? अच्छा, अब इसमें एक चीज देखो, अब ये समझ में आ गया, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0. ठीक है, फॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, इतना नहीं लिखेंगे ना, मैथ में है ना, जस्ट राइट ऑफ 3 ऐसे नहीं बोलेंगे. हम बोलेंगे जैसे सपोज f of 0 प्लस h बोलेंगे, जस्ट राइट ऑफ f of 0 माइनस h बोलेंगे, और f of 0 बोलेंगे. ठीक है, ये तो वही बोलेंगे, बट इसको बोलते हैं जस्ट राइट ऑफ 0 को बोलेंगे f of 0 प्लस h, जस्ट लेफ्ट ऑफ 0 को बोलेंगे f of 0 माइनस h. फाइन एवरीवन? ठीक है, तो अब एक फॉर्मल डेफिनेशन अब डिफाइन कर लेते हैं कंटिन्यूटी की. देखो ऐसे बड़े समझ में आ जाएगा. अ फंक्शन fx is
said to be continuous at x equal to a if बोलो क्या है चलो सिया तुम ही बताओ क्या है if so क्या तीन चीजें बराबर plus होनी चाहिए x plus f of x plus h and f of x minus h is equal to each other बट यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है a है ना तो a plus h हाँ so तो a f of a minus h is equal to f of a is equal to f of a plus h ठीक है ठीक है अब मैथ में बार बार ऐसे भी नहीं बोलते f of a plus h f of a तो इसको ना बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट RHL ठीक है अच्छा एक चीज और है इसमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तुमको पता ही होगा ना ये तो पिछले साल से ठीक है वो पिछले साल वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना उसमें h के बारे में शुरू में I have discussed about h okay in the previous class recording so please watch that is important okay I have discussed a few things about h everyone has understood this is called left hand limit this is called right hand limit ठीक है you have understood this everyone ठीक है okay now I'm going to ask Arushi in the previous example we did what is f of 0 f of 0 is 1. what is LHL at 0 LHL at 0 is still 1. what is RHL at 0 It's 2. yes has everyone understood her answers ठीक ओके नेक्स्ट एग्जाम पेज पे जाओ नेक्स्ट पेज पे जाओ फिगर 5.2 बना है ठीक है फिगर 5.2 बना है और उसके ऊपर वहां पे ये भी लिखा है fx is equal to 1 if x is not equal to 0 and is equal to 2 if x is equal to 0 right दिख गया ये everyone एंड उसका ग्राफ भी देख लो बनाया है you will understand now that if x is not equal to 0 the function is 1 everywhere but at x equal to 0 there is we have a problem and the function is defined x equal to 2 right ठीक है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तरुण No, sir, it's not continuous. is this function continuous at x equal to 4 Yes, sir. is this function continuous at x equal to 0 No, sir. why Sir, because f of 0 is not equal to f of LHL 0. edit मतलब ठीक से बोलो correct answer is correct but you're not saying it correct because f of 0 So, not sir, f is not equal to f of LHL of 0. LHL f of LHL नहीं बोलेंगे LHL at 0 बोलेंगे LHL at 0 ठीक है Okay, LHL at 0. या फिर तुम बोलो f of 0 minus h या फिर इसको बोल सकते हो you can also call it LHL at 0 okay Okay, sir. so either you will say f of 0 is not equal to LHL at 0 or you can also say f of 0 is not equal to f of 0 minus h or you can also आगे ये भी बोल सकते हो it is also not equal to f of 0 plus h but you don't need this statement just say you don't need this further statement the moment you said this it is discontinuous right fine or the moment you said this it is discontinuous you can take any pair and say okay fine Okay, sir. everyone has understood this अच्छा एक चीज और देखो इस फंक्शन में इस ऊपर वाले फंक्शन में ठीक है इस फंक्शन में देखो इस फंक्शन में if you redefine f of 0 to be 1 if you listen to my statement carefully okay अभी f of 0 कितना है इस प्रेजेंट कंडीशन में f of 0 कितना है 2 है लेकिन तुम एडिट कर दो f of 0 को 2 की जगह f of 0 को 1 कर दो
तब ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा ना कंटिन्यूस Yeah. हो जाएगा. एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस? नहीं सब समझ में आ गया ना सबको? ये सिर्फ एफ ऑफ 0 एक पॉइंट के पे इसका वैल्यू अलग है एंड दैट्स व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूअस, राइट? इस वैल्यू को उठा के यहां कर दोगे तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट? एवरीवन हैज, आर यू गेटिंग दिस? बट इसमें ऐसे कुछ नहीं कर सकते ना, इसमें किसको ऐसे नहीं कर सकते ना, तुम इसको उठा के इधर पूरा ये उठाना पड़ के नीचे लाना पड़ेगा, राइट? एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेंज करके तुम इसको कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, राइट? इस वाले को नहीं कर सकते ना, इसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. ऑब्वियस है ना कि नहीं? समझ में आया ना? ये क्या है? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है. और ये वाली डिसकंटिन्यूटी कैसी है? ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है. इस डिसकंटिन्यूटी को तुम रिमूव कर सकते हो, बस एक पॉइंट को रिडिफाइन करना है. ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको? ये दिस इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और ये वाली डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. लिख लेना इसके साइड में, ठीक है? ओके. अभी ना हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? थोड़े से फाइन. अच्छा, एक चीज स्टेटमेंट बताया था, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस, राइट? बताया था, ठीक है फाइन. अपना एक्सरसाइज 5.1 पे आओ. एक्सरसाइज 5.1 पे, ठीक, एक्सरसाइज 5.1 पे आ गए और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है? तो लिखा रीड आउट द क्वेश्चन. Yes, sir. F of x equal to 2x plus 3 if x is if 2 is greater than equal to x. नहीं, ऐसे And बोलते हैं f of x is ऐसे बोलते हैं x is less than equal to, ठीक है? okay. ठीक है. Then f of x is 2x minus 3 if x is greater than 2. ठीक है. तो देखो, अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है एफ एक्स. इसको क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस अगर होगा तो कहां पे होगा? कहां तुमको, वेयर डू यू सस्पेक्ट इट टू बी डिसकंटिन्यूअस? एट विच पॉइंट शुड आई चेक? Sir, at 2. At 2. अच्छा, why at 2? Answer is Sir, correct. because it's break. Sir, because LHL at 2 is not equal to RHL at 2. We don't know that yet. But sir, it's breaking like x. It's breaking at 2 ना, दिख रहा है ना सर, x equal to 2 पे ब्रेक कर रहा है. सर क्या ऑब्वियस क्वेश्चन पूछते रहते हो आप, है ना? I have a question. Why are you not checking at x equal to 4? Why are we not doubtful about whether we should check x equal to 4 or not? See a volume, decibel. It's greater than 2. हाँ तो क्या हुआ? मतलब हाँ मुझे पता है x greater than 2. It's the same equation when x is greater than equal to 2. So it won't break. It's going to be continuous. Yes, देखो x greater than 2 पे ये है ना 2x minus 3. जब x greater than 2 है तो 2x minus 3 और 2x minus 3 तो पॉलिनोमियल है, ये नहीं टूटेगा ना कभी. समझ में आया एवरीवन? तो why is this function not breaking at x equal to 4? We are not checking, we are not bothered because यार ये पॉलिनोमियल है, नहीं टूटेगा कहीं पर नहीं टूटेगा ये, ठीक है? ये पॉलिनोमियल भी, ये भी एक पॉलिनोमियल है p1, ये भी एक पॉलिनोमियल है p2, ये जहां पर भी ये नहीं टूटते. और आपको तुम जोड़ रहे हो ना p1 p2 को एक जगह पे, कहां पे? 2 पे. तो 2 पे टूट सकता है ये फंक्शन टूट सकता है, राइट? ये वाला. अंडरस्टूड एवरीवन? अभी ग्राफ बना के देखेंगे, समझ में आ जाएगा. चलो एक बात बताओ, अब मुझे आदि बताएगा f of 2 कितना है? f of 2 is 2x plus 3. f of 2 is not, हाँ 2x plus 3 में डालना है, बट क्या डालना है? x equal to ये 2, है ना? yeah, 4 plus. Yeah. कितना आंसर आएगा? 7. 7. 2 2 4 3 7. हाँ
What is f of 2 plus h? 2 plus h will be 2x minus 3. So 2 into 2 plus h minus 3. अच्छा, ये तुम इसमें क्यों बोला, तुमने इसमें क्यों बोला और इसमें क्यों नहीं बोला? क्योंकि it's greater than 2. So we have to What take is greater than 2? 2 plus h is greater than 2. F of 2 Very plus h. good, very good. देखो 2 plus as 2 plus h is greater than 2, f of 2 plus h में ये वाला है, इसमें डालना है, इसमें नहीं डालना है, ठीक है? What about f of 2 minus, हाँ लिख लो पहले सब लोग. F of 2 minus h is how much? Adi. It will be 2 into 2 minus h minus 3. Sorry, plus 3, plus 3. इसमें ऊपर वाले में डाला है ना. हाँ, ये बता दो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, पहले इसकी बताओ. 2 plus h. किसकी? 2 plus h की. हाँ, इसकी वैल्यू 2 plus h की आएगी 1 plus h. क्या? 1 plus h. 1 plus 2h. Yeah, 1 plus 2h. Sorry. 1, ठीक है. और इसकी कितनी आएगी? इसकी आएगी 7 minus 2h. 7, ठीक है. फाइन. तो क्या LHL RHL सब बराबर है? No. नहीं. फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? No. नहीं है ना. अच्छा, RHL कितना आया? 1 आया. और LHL कितना है? 7 है. LHL एंड f of 2 कितना है? 7 है. ठीक है, ठीक है. इसे थोड़ा सा हम ना ग्राफ बना के देखेंगे, समझेंगे what is going on. Okay, write this till here and yeah, when you're done let thumbs up दिखा देना. Adi, what was the function? F of x equals 2x plus 3 if x is दूसरा 2x minus 3 था क्या? हाँ, 2x minus 3 second. ठीक है, इसको देखो. 2x plus 3 कब था? जब x was less than 2. 2x plus 3 when x is lesser than or equal to 2. Less than equal to 2. देखो, 2x plus 3 is the blue line. Okay, I don't think the line color is very visible. Contrasting नहीं है ना ये. एक मिनट. Okay, purple बना दिया. Very good. Black बना दिया.
ठीक है, तो still ठीक है, blue and black is contrasting, fine. Blue is the line when x is less than 2. X is less than 2 meaning x is less than 2 meaning C. What is the meaning of x less than 2? This is 2, right? X is yeah, na 2 comma 2 comma 7, right? So what graph do you have is you have this x is less than 2 to 2x plus 3. So you have this red line, right? So you have this red line, right? Everyone, right? And then for x is greater than 2, it is following the black line. At the black line, 2x minus 3, 2 is a 4, 4 minus 3, for 2 2 is a 4, 4 minus 3, 1, no? So it is like this, right? Everyone has understood this, and you have to delete the other parts. So for example, I'm trying to delete the other lines. Okay, other lines I'm trying to delete. Yeah, so yeah, like this. Okay, and like this. Yeah, right. This is your fx. Do you understand? Everyone, make this is your fx, right? Write fx and make this graph fx. This is the graph of x. As you can see, LHL is 7. यहाँ देखो ये 7 है, ठीक है? LHL is 7. Okay. LHL is 7 at 2 and RHL is 1. दिख रहा है? This function is discontinuous. No? This. अच्छा ये बताना, एक चीज होती है jump of discontinuity. Jump of discontinuity is this jump. Sorry. What is the jump of discontinuity? This y jump. In this case, what is the jump of discontinuity? Will it be like 7 minus 1, 6? Yes, it is 7 minus 1, it is 6. Everyone has understood? The jump of discontinuity is 6. And the function is discontinuous at x equal to 2. Okay. And you can see we didn't need to check at x equal to 4. ये देखो 4 पे ये है ना, ये तो of course continuous है. समझ में आया? X equal to 4 पे ये continuous है. Okay. Fine. Fine, everyone. Yes, sir. Okay. You do the same thing for question number 11. Okay, for question number 11. Do it yourself. Question number 11 and maybe question number 12. Yeah, 11 and 12.
Fuck. We have to find the graph also from decimals. Yeah, sorry, I had a call. You guys were speaking something. Hmm. Do you have to do the graph also? It's good if you can, but you don't need the graph to do. School exams में नहीं करने की जरूरत है ग्राफ बनाने की, ठीक है? ठीक है? So, I'm done with the question. 11th question. Is there anything else that I have to do? I think I missed you in between. You did what in between? Like, no. What are sums are we supposed to do? Question number 11 and 12. okay. So the 11th one, like the LHL and the RHL values are the same. Same. Yes, sir. Yeah, I'm getting yeah. continuous. So yes, it's continuous. Like there's no point of discontinuity. So I just left it like saying that it's continuous at 2. देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, राइट? पहला लाइन लिखना है द फंक्शन इज ऑफ कोर्स fx इज ऑफ कोर्स कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 2. मतलब वो तो है ही है, बाय यू नो दैट, राइट? मतलब you don't even need to check all the other points, right? Then you have to check at x equal to 2, which you just did, right? और फिर देखा तुमने 2 पे चेक किया तो देखा LHL f of 2 RHL बराबर है, Right. so therefore function is continuous for all x belonging to R, therefore it is never discontinuous. Okay. Okay. uh, uh, 13 भी करो, 14 भी करो, ठीक है? 13 भी करना है, 14 भी करना है.
So the 13th one, it's discontinuous at 1, but at other points it's continuous. Thirteenth one is discontinuous at x equal to 1. Okay. अच्छा हाँ, इसको अगर वो एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ना, तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है. ओके, तो उसके बारे में ऐसे नहीं लिखना कि बट इट इज कंटिन्यूअस एट अदर पॉइंट्स. ओके, एक बार पेन उठाना पड़ा ना, उठाना पड़ गया तो डिसकंटिन्यूअस हो, खत्म. ठीक. So for the 14th one, I didn't like. I made the graph and for like my own reference, but like, what do you want me to write? I didn't. I like, is it discontinuous? It's discontinuous at 1 and 3. What Yes. more am I supposed to say? I mean, बस ठीक है, fine. Have you shown that? अच्छा, सिर्फ ग्राफ बना के मत बोल देना एग्जाम में. What do I write and like show? एग्जाम में ऐसे लिखना है कि एग्जाम में ग्राफ देखते ही नहीं एग्जामिनर, उसको नहीं जानता वो, ठीक है. तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं ग्राफ, ऐसे समझो, ठीक है. Okay. ग्राफ इज अ यूजफुल स्किल व्हिच यू शुड नो, ठीक है. हाँ. क्योंकि उससे आंसर, मतलब कई बार क्वेश्चन देख, कभी कभी ऐसा होता है सोल्यूशन तुमने सॉल्व गलत किया, ठीक है, लेकिन तुमको ग्राफ पता है, तुमको पता है कि इसका आंसर ये होगा, पहले से ही आंसर पता होता है, ठीक है. तो तुमको बैठ के सॉल्व करके निकालते हो तो यू जस्ट कंफर्म इट. ओके, व्हिच द एग्जामिनर सीज. अच्छा, दूसरी चीज है, इसमें ऐसे क्वेश्चन करना है. f(1) लिखाओ. f(1) कितना डालोगे? 3. हाँ. ये डालोगे ना. हाँ. f(1 - h) कितना डालोगे? 3. What? 1 - h. LHL at 1. Yeah. 3. और f(1 + h) कितना होगा? f(1 + h) would be 4. तो बस ऐसे लिखना है, as f(1 - h) is not equal to f(1 + h), function is अच्छा, discontinuous at x equal to 1. Fine. ठीक है. Understood. Say 13 and 14 only, no? You have to do 13 and 14 also. Yes. Yeah. Okay. Meghna, Varun, yeah. Tarun, you have 2 R's or is it a typo? You have 2 R's in your name. Yeah. I have 2 R's in my name. Okay. And Philip. Guys, have you got 12th? Everyone has got 12th. Okay, everyone has got 13th. Tulika, what is the answer for 13th? Yeah, sir. I got discontinuous. Okay. What is your RHL and LHL? RHL is -4 and LHL is 6. RHL is -4. RHL is -4. 1 - 5 -4. और RHL is LHL is 6. ठीक है, करेक्ट. कितना है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी? Sir, 1. जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब होता है कितना ऊपर फंक्शन चढ़ गया या गिर गया ना, मतलब LHL और RHL में डिफरेंस. LHL RHL में डिफरेंस कितना है, कितने दूर है RHL LHL से? 2 कहाँ है? अभी तुमने एक 6 बोला, एक -4 ऐसे कुछ बोला ना. नहीं. हाँ. कितना बोला था RHL? RHL -4. और LHL कितना है? 6. कितने दूर है एक दूसरे से ये? 2 ना. नहीं, अरे -4 और 6 एक दूसरे के कितना दूर होते हैं? -10. -10. हाँ, मतलब डिस्टेंस
10 में मेजर है ना, डिस्टेंस दूर मतलब 10, जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितनी है 10, या ओके ठीक है। 14th का आंसर तो रिया ने बता दिया था ना, डिस्कस कर दिया था 3, इट इज डिसकंटिन्यूअस राइट एवरीवन। कौन गया छोड़ के, अभी कौन गया, वरुण, तरुण गया, अच्छा। इंटरनेट खराब है क्या तुम दोनों, तो वरुण का इंटरनेट स्टेबल है, तरुण का इंटरनेट स्टेबल नहीं है, ऐसे कैसे है? Sure, I think it's not reaching his room. What? So I think the network's not very good inside the room today. Okay. Okay. ठीक है। 15th, अच्छा गाइस, व्हाट अबाउट 15 के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? तो देखो 15 का आंसर बताओ, ऐसे देख के, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देख के बोलो भाई। 0 0 0 0 0 0 1 पे 0, Discontinuous is 0 and 1. 0 minus h 2 minus. So isn't it only discontinuous at 1? I think it's continuous at 0. हाँ, ये समझ में आ गया सबको? इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ना? ये समझ में आ गया ना? Yeah. और 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है ना? 1 पे LHL कितना है? It's 0. Written in She is literally गा रही है वो क्लास में। उसको गाना भी किसी मैथ क्लास में, हाँ पर है, अंडरस्टैंडेबल है टोटली। और तो लिखा व्हाट इज RHL at x equal to 1? so for the 15th one, Yeah. 1 minute, let me check. So won't it be 1? RHL at x, nope, 1 1। No, wait, sorry, 4. ऐसे 4? Sir, we take the 4x function, right? उस पे x की जगह डालेंगे 1 plus h, Yeah. तो आएगा 4 plus 4h which is 4। ठीक है, ओके ठीक है। अब ना क्वेश्चन नंबर अपना 17 देखते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a and b so that the function f defined by ax plus 1 x less than or equal to 3 and bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equal to 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, क्या करना है बस, all you have to do is do screen share, yes, ax plus 1 if x is less than or equal to 3 and it is bx plus 3 if x is less greater than 3, fx की वैल्यू। ठीक है, बोल रहा है fx is continuous at x equal to 3, f of 3 कितना है? f of 3 है, डालना है, इसमें डालेंगे ना 3, so a times 3 plus h plus 1। ठीक है, ओके, f of 1 second, f of 3 plus h किस में डालेंगे आरुषि? इमेज फंक्शन, bx plus 3, yes, so what will I put? b times of 3 plus h plus 3. yes, and f of इसका भी बता दो 3 minus h, ax plus 1. हाँ क्या लिखेंगे वो बता दो। Oh, a 3 minus h plus 1. Tell me what is the next step in every one of, इसमें बोलो कितना next step है, what is next step? Simplify. 3a minus ah plus 1. एक और तो कुछ नहीं होगा ना, 3a plus 1 right? Yeah. Because a into h is 0। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होगा?
3b plus, oh, that one. 3a, ये 3a. 3a plus, what's the other one in the bracket? Sorry, the f of 3 था ना, my bad. मेरे को 3 plus h नहीं लिखना चाहिए था, my bad. Just 3 लिखना चाहिए, right? Has everyone understood this mistake? 3a तो plus 3a 1. plus 1 और इसका कितना आएगा? 3b plus bh plus 3. Which will become 3b plus 3. अब बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोला है उसने, बोला है, मैं बोल रहा हूँ है, मतलब ये दोनों तो ऐसे भी इक्वल है, ये भी इक्वल होना चाहिए, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, राइट? ठीक, तो क्या करेंगे, 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. So find the relationship, मतलब 3 times of a minus b is equal to 2, right? So you can leave it like this, or you can write a minus b is equal to 2 by 3, or you can write a is equal to b plus 2 by 3. Anyhow, you can say, or you can even write it like this. Any one of these answers you can put, okay, this is the relation between a and b, so that this function is continuous. Okay? So क्या मतलब है? For example, if you had taken b is equal to 1, right, then a would be 1 plus 2 by 3 is 5 by 3, and then b हो जाता 1 1, तो 3 देखो एक्चुअल कितना आएगा, 3 plus 3 6 आएगा, और a की वैल्यू 5 by 3 है, so 3 into 5 by 3 plus 1, which is again 6. So you have LHL is RHL. Fine. Any value, b is 1, a is 5 by 3, b is 1, a is 5 by 3, b is 2, b is 2, a is 2 plus 2 by 3 is 6 2 8 by 3. Okay, like this. So many values, this pair can take many values, but the relation is this, or a minus b is 2 by 3. Okay, the relation is a minus b is 2 by 3. Fine, everyone? ठीक है. You do now 18, okay, on your own. 18.
18th, what do you think is the answer? Discontinuous at x is equal to 0. Pardon? I said it's discontinuous at x is equal to 0. Why? For any value for lambda. थोड़ा पास में आके बोलो. I said for any value of lambda, x is equal to 0 पे discontinuous ही है. हाँ, क्यों? आंसर सही है. f of 0 कितना है? It's not a polynomial. When you say it, what do you mean? It is not a polynomial. Which is not a polynomial? Hi, Meghna. Yeah, sir. I'm thinking. What is not a polynomial? पॉलिनोमियल है दोनों. वो x square minus 2x पॉलिनोमियल है, ठीक है, और 4x plus 1 भी पॉलिनोमियल है. अच्छा, f of 0 कितना आया? सिंपल क्वेश्चन, 0. ठीक है. और RHL at 0 कितना है? 1. इतना सबको समझ में आ गया ना? LHL निकालना है. देखो f of 0 आ गया और f of RHL 1 है, तो ऑफ कोर्स ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो ही गया ना, कुछ नहीं कर सकते इसके साथ. दूसरी चीज लैम्डा को, तो इसके लिए ना फंक्शन, तुम लैम्डा को कुछ भी डाल लो. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस? फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा. नहीं, हाँ, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट. ये फंक्शन कभी कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो तुम कुछ भी डाल लो. सॉरी, तुम लैम्डा कुछ डाल ही नहीं सकते, राइट. एक मिनट. फॉर दिस फंक्शन, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ. For any value of lambda, this function is discontinuous. So this function is continuous for no value of lambda. Yes, ठीक है. तो answer is no value of lambda. Okay, ठीक है. What about continuity at x equal to 1? Continuous. Continuous, ठीक है. अब मेरा एक और क्वेश्चन है, ठीक है. मैं इस क्वेश्चन में ना जो 4x plus 1 है, 4x plus 1, ठीक है, उसको चेंज कर देता हूँ, उसको 4x कर देता हूँ, 1 हटा देता हूं वहां से. अब 0 पे क्या है फंक्शन? It will be 0 RHL. RHL will be 0. LHL? It will also be 0. पक्का? Hmm. LHL 0 के LHL कितना आएगा? वैसे इस फंक्शन का LHL है कितना, वो बताओ. So it won't make a difference because 4x plus 1 is for x is greater than 0 and LHL is not greater than 0. ठीक है. अच्छा, LHL डालने के लिए तुमने 0 minus h डाला था ना ऊपर वाले फंक्शन में, तो आया था लैम्डा इंटू माइनस h square minus 2h which actually became h square plus 2h, right? यही आया था. So you have lambda into h square plus 2h. समझ में आया सबको कि नहीं? तो लैम्डा इंटू एच स्क्वायर प्लस 0, ये पूरा चीज 0 है ना, तो लैम्डा इंटू 0 इज 0, राइट. दैट्स व्हाई यू सेड एलएचएल इज 0. यस और नो एवरीवन? तुमको डाउट है तो पूछ लो, अभी भी मैं करके बता दूंगा. डाउट है क्या? नहीं, ठीक है. अब मुझे बताओ, मैंने लिखा है कि 4x plus 1 को 4x किया है, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस एट x equal to 0 है कि नहीं है? Will be continuous. कंटिन्यूअस है, राइट. कंटिन्यूअस है ना फंक्शन, राइट. Yeah. अच्छा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इट इज कंटिन्यूअस? 0. No, wait, any value can be, because at the end of the day it will be 0 only. वेरी गुड. यही मैं समझाना चाह रहा था. सबको समझ में नहीं आया है तो एक बार लिख लो. इफ नया क्वेश्चन लिखो, उसमें ना 4x plus 1 की जगह 4x plus 1 की जगह 4x लिखना, और फिर लिखना दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा. ठीक है, क्योंकि एनीवे वो लैम्डा इंटू x square plus 2h हो जाता है, लैम्डा इंटू 0 हो जाता है. ओके, कि नहीं समझ में आया क्या? आ गया ना? हाँ, लिख लो इसको.
So you didn't get right? No, I didn't. हाँ So चलो 4x, कम से कम how is एक it? बच्चे का चेहरा पढ़ना तो आ गया मुझे। रिया का पहले से आता है। देखो क्या स्क्रीन लैम्डा टाइम्स ऑफ x square minus 2x 4x plus 1. Don't make life difficult for me. Please ask yourself, okay? Already my life is very difficult. इसमें ये 1 हटा दिया, अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, 4x, ठीक है। तो LHL है लैम्डा टाइम्स ऑफ x square plus 2h, यही है ना, which is 0, lambda into 0, 0. F of 0 is is 0, lambda into actually 0, right? 0. And if RHL जो है RHL, it will be 4 of 0 plus h, which is 4h is 0, right? अब देखो लैम्डा इंटू 0 हो रहा है ना, लैम्डा कुछ भी होता है, लैम्डा मान लो 5 होता, लैम्डा 5 होता मान लो, तो यहाँ पे क्या लिखते तुम, यहाँ पे लिखते 5 इंटू 0, अभी भी LHL 0 आता, ये भी 5 इंटू 0 0 आता, और ये तो एनीवे इसके नीचे तो मैटर ही नहीं करता, राइट? अगर लैम्डा 5 की जगह तुम 6 करते मान लो 6, तब भी 6 इंटू 0 LHL 0 आता है ना। But I don't know why I was doing the opposite. I was putting 0 and lambda and any value in x. नहीं, हाँ तो ठीक है, ओके। सो द पॉइंट इज, अगर ये फंक्शन है, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल लैम्डास एट x इक्वल टू 0, राइट? सो fx लिख लो, fx, ये फंक्शन पूरा लिख लो, एक नया फंक्शन x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, और fx इज continuous at x equal to 0 for every x belonging to, sorry, lambda belonging to real number, for all lambdas, right? Basically ये इसका मतलब होता है for every, पता होगा ना, for every x belonging to a lambda belonging to real number, ठीक है, for all lambdas, fine. Have you seen a solar eclipse? मेघना भी थोड़ा सा हिलेगी तब देखना। देखा देखा, एक से एक लूनर इक्लिप्स दिखाई है मुझे, 1 साल पूरा, पता है तुलिका ने पूरा 1 साल लूनर इक्लिप्स दिखाया है, देखना तुलिका को। अभी नया सोलर इक्लिप्स वाली आई है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ओके। अभी मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ उनको, व्हाट इज बॉक्स फंक्शन और GIF फंक्शन, ओके। देखो बॉक्स फंक्शन और GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इज आल्सो कॉल्ड फ्लोर, हाँ फ्लोर फंक्शन, ठीक है, फ्लोर, और इसका सिंबल होता है ऐसे बॉक्स एक्स, ओके। तो बॉक्स एक्स है बॉक्स ऑफ 3.4, अच्छा इसका वैल्यू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, what someone was saying something, no, greatest integer less than or equal to, greatest integer less than or equal to, मतलब 3.4 का जो आंसर आता है 3, ठीक है। कैसे, इसका लॉजिक क्या है, फिर से सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब जैसे x है, जैसे 3.4 है, ठीक है, तो -1 -2 -1 0 1 2 3 4, ओके। 3.4 कहाँ होगा, यहाँ होगा ना 3.4 कहीं पे, राइट? What are all the integers? What are all the integers less than or equal to 3.4? The integers which are less than or equal to 3.4 are 3, 2, 1, 0, -1, -2, all these integers, right?
What is the greatest integer all of them? 3. ठीक है, तो बॉक्स ऑफ 3.4 कितना आया? 3. फाइन एवरीवन, ओके. दूसरा जैसे बॉक्स ऑफ 2.7 कितना आएगा आंसर? 3. 2. बॉक्स ऑफ 3.1 3. 3. What about box of 3? 3. 3 less than or equal to ना, or equal to. Okay. What about अच्छा इसका बताना, box of 3 plus h? 3. 3. Box of 3 minus h? 2 है ना इसका आंसर. समझ में आ गया ना? लिख लो, इतना लिख लो जितना भी है इस पे स्क्रीन पे. उसके लेफ्ट में जो सबसे पास में इंटीजर होता है वो आंसर होता है. ठीक है, तो लिखा. हाउ अबाउट, अच्छा एक बात बताना, -1.7 का बॉक्स कितना होगा? -1.7 यहाँ पर है, -1.7 यहाँ है. समझ में आ रहा है? -1.7. -1.7 से छोटे इंटीजर्स कौन से हैं? छोटे इंटीजर्स कौन से हैं -1 से? -2 है, -3 है, -4 है, -5, यही सब है ना. आउट ऑफ ऑल दिस विच इज द बिगेस्ट? -2. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, -1.7 इज -2. जस्ट लेफ्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर है. ओके, So with greater integer कुछ. देखो -1.7 कहाँ है देखना, 0, -1, -2, -3. सबसे पहली बात समझ में आती है कि -1.7 यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा. ठीक है, ठीक है, यहाँ है. समझ में आ रहा है ना? इस पॉइंट से जो छोटे इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो इंटीजर्स है -4, -3, -2, यही सब है ना. इसके पीछे -5, राइट. इन सब इंटीजर्स में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? -2. सॉरी, अंडरस्टूड? डाउट अभी भी है? नहीं, ठीक है. -2 का बॉक्स कितना है? Minus. -2 प्लस h का बॉक्स कितना है? -2. -2. -2 माइनस h का बॉक्स कितना है? -3. -3. समझ में? ये देख लो, इसको भी लिख लो. समझ में आ गया ना? आदि तुमको आ गया समझ में? Yes. ओके. अच्छा, समझ में आ गया तो इसको बता दो. 3. 3. Nine. Got you. I think I got you. It's not 9. When I Oh, got yeah, it's 9. It's 9. Actually, pi square is 9.869, so it is 9. Okay. What about this? Both the 27. Just say it, man. 27. so 31. Yes, it is 31. ठीक है, 27 नहीं है क्योंकि पहले कैलकुलेट करना है फिर बॉक्स लेना है. ठीक है, ओके. ये इसका आंसर 31.00 कुछ है, and therefore the answer is 31.006 ऐसे कुछ है. ठीक है. What about pi square? नहीं, सॉरी, pi box square, ये इसका आंसर कितना है? Nine. What about pi box and then cube? 27.
हाँ ये 27 है, ठीक है, ये देखना, ये और ये ध्यान से समझ में आ गया, ठीक है, आ गया ना? ओके ओके इंटीजर z। अच्छा एक चीज और क्वेश्चन पूछता हूँ, एक इंटीजर है z, ठीक है, ठीक, z का बॉक्स कितना होगा? इंटीजर z है तो z का बॉक्स कितना है? Z itself. Z only. z itself, very good. Z plus h. Hello, Z. sir. Hi, who is this? Kshitij? So, this is Adesh. Who is Adesh? Oh, the 8:30 class. Yeah, Yeah. I'll join you at 8:30. Okay, you stay here. Okay, yes. Z plus h is z. Okay. What about z minus h? Z minus 1. Z minus 1. Do all of you see that the box function is discontinuous at integer functions, integer points, right? Yes. Your homework is make graph of box function, ठीक है, वो स्टेप फंक्शन जो ऐसा बनाया था ना वो तुमको बनाना है अपने आप, ठीक है? So wasn't that already like there for, wasn't that the 14th one really, like in its own way? 14th one, no. No, but like the same looking graph. Yeah, same looking graph. Yeah, okay. But 14th one में 1 से 3 तक है ना, 4. Yeah, no, this will be 1 and 2. Yeah. ठीक है. Okay. Okay. And then you have to do, please check the spreadsheet for your homework. Okay, spreadsheet पे देख लो. I have sent a link and I have also sent page 1 and 2 of that link. Okay, the ones which you'll not be able to do, we'll discuss them, okay, in the classroom. Okay. Sir, so the link you've sent in the group, uska page 1 and 2 you have to do. ग्रुप पे भी भेजा है क्या? शायद ग्रुप पे भेजा, हाँ ग्रुप पे भेजा है. नहीं ग्रुप पे पुराना वाला भेजा है. Yeah, because you've done ग्रेड 11th का जो रिवीजन है Yeah. वो नहीं भेजा है. Okay. अच्छा दूसरा मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, रुको. तुम उस पे देखोगे तो तुमको दिख जाएगा वैसे उसी ड्राइव शीट में. अभी फिर से मैंने पेज 1 2 दिया डिफरेंट शीट का. अच्छा, you just sent ग्रेड it. 12 वो 12th की है. अच्छा, you just sent it. Okay. हाँ ठीक है. Okay. ओके